Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are very well and practicing as usual, studying as usual. So, today in the class, first let's talk about the last class. Okay, so in the last class, I gave you one exercise that was a very easy exercise, and I asked you to complete that exercise. I hope you would have completed that exercise. We will review that exercise, but before that, let's talk about whether you are practicing or not, because this is something very important. And all the time, you have to keep this point in your head that this is something you have to keep on doing, keep on making, thinking, and practicing with your friends. And remember, if you have this excuse that you don't have friends, you don't know how to practice, and then there is a solution for that excuse. And the solution is that you can practice by yourself also. Okay, so खुद से भी practice कर सकते हैं, खुद से भी सारे जितने भी structures हैं आपने समझे हैं, सीखे हैं, and the help of different exercises, the help of different pictures. We saw some pictures also, right? You saw some pictures, and then we tried to see that what kind of sentences you can think of. You can make sentences when you see those pictures. So pictures show करने के पीछे भी यही idea था that you get into the habit of thinking, कि आप thinking के habit में जाएं, and then you think and then you make some sentences. So this is something that depends from person to person, right? So it is all about different thoughts. सबके अलग अलग thoughts होते हैं, opinions होती हैं. So it is not necessary कि सिर्फ एक ही तरह का sentence आएगा, right? You can think in a different way, but the point is that whether you have proper structure or you have proper sentence for something that you want to say. क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आप ही को कुछ पूछना है, आपको ही कुछ बोलना है, तो उस सिचुएशन में जैसे आपको सेंटेंस थॉट्स आ रहे हैं, जैसे सिचुएशंस आपको समझ में आ रही है, इट कुड बी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड देन according to that situation you have to make different sentences, you have to ask different questions. So सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप स्पोकन को प्रैक्टिस में लेके आइए, राइट? एंड फॉर दैट you need that atmosphere where you can ask something, where someone is there who is asking you, or who with that person you are doing a small conversation. So इससे ज़्यादा जल्दी जल्दी लर्निंग होगी एंड जल्दी जल्दी आपको आइडियाज भी आएंगे कि किस तरह से हमको सेंटेंसेस यूज करने हैं, क्योंकि ये सारे ही बेस्ड हैं सिचुएशन पे, राइट? सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज होना है एंड वही सेंटेंस रिपीट होना है. इट डिपेंड्स कि कैसी सिचुएशन है, आपको क्या यूज करना है, क्या यूज करना चाहते हैं. सो एज पर दैट सिचुएशन you will use different sentences. So there could be different questions, there could be different answers. So remember that you have to be comfortable in all types of sentences. जितने भी sentences हैं, जितने भी structures हैं, उन सब में आपको comfortable होना है. And comfortable होने के लिए फिर से वही बात है कि जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी. क्योंकि यहाँ पे एक जो छोटा सा और वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वही डिफिकल्ट पॉइंट भी है कि सेंटेंसेस हम किस तरह से यूज़ करेंगे, राइट? सो सेंटेंसेस सिचुएशन वाइज यूज होंगे. अब सिचुएशन में कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, तो वहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स की हमको अंडरस्टैंडिंग होना है. एंड स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे है वोकैबुलरी, के वर्ड्स भी तो होने चाहिए हमारे पास. अगर हमको कुछ सी वर्ड को यूज करना है, तो जब तक हमको उसका फॉर्म पता नहीं है, हमको उसका सेकंड फॉर्म पता नहीं है. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट पास्ट, something happened earlier, so there you will use second form of that particular word. So that's why it is important to know common verbs. Common verbs जितने, अब ये जितने भी common verbs आपको कैसे पता चलेंगे, वो ऐसे ही पता चलेंगे जब आप उनको यूज करते रहें. फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ड यूज किया थ्रेटन. थ्रेटन इट मीन्स धमकाना. सो जैसे ही आपको कुछ सेंटेंस यूज कर रहे हैं आपको, और वहां पे आपने रियलाइज किया दैट आई वांट टू यूज दिस वर्ड, सो इसके लिए ये वर्ड सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि दैट यस, दिस वर्ड
I have to use. And then you have to see the spelling. Then you should know the three forms of this verb. So likewise जितने भी verbs हैं उनके थ्री फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम उसको यूज कर लेंगे रिलेटेड टू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. सो ये जितने भी चीजें हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं. एंड इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोनाउंसिएशन. सो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसे एक एक करके सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड आपको हर चीज़ पे फोकस करना है, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारे जो हैं ये लैंग्वेज के इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एंड इन छोटे छोटे पार्ट्स से बन के ही लैंग्वेज इज देयर. सो दैट्स वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पार्ट्स. एंड जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, आप कोशिश जब करेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है. आई वॉन्ट टू से समथिंग लाइक दिस, आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ टू आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ टू से दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से. ये सारे जब डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, यू नीड आंसर. सबका क्वेश्चंस के, डाउट्स के आपको आंसर्स मिलने हैं. जब आंसर्स मिलेंगे जभी तो क्लैरिटी आएगी, तभी तो कंफ्यूजन दूर होगा. सो फॉर एग्जांपल हमको कोई कंफ्यूजन है एंड क्वेश्चन है, एंड पता, लेकिन ये नहीं पता कि उस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है, उस डाउट का क्या क्लैरिटी कैसे हमको लेके आना, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है. सो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी तो कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी. सो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी आपको, जब आप सेंटेंसेस को यूज करेंगे. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक एंड टू स्पीक. सो जितना ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आप फोर्स कर रहे हैं अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए, उतना ज़्यादा वहाँ पे क्लैरिटी आएगी एंड अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी, राइट? सो इसलिए हम जितनी भी हमने अभी क्लासेस करी हैं, आज हमारा 36th डे है, राइट? 35 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं एंड 35 क्लासेस में हर क्लास में इसी बात पे फोकस है कि आपको प्रैक्टिस करनी है. आप एक्सरसाइजेस देखिए, आप स्ट्रक्चर्स देखिए, उन एक्सरसाइजेस को यूज़ करके आप अपने खुद के एग्जाम्पल सोचिए, आप अपने खुद के क्वेश्चंस बनाइए, राइट? सो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये आपके आइडियाज़ के लिए हैं. सो ऐसे नहीं है कि बस हमको इन्हीं एक्सरसाइजेस पे डिपेंड होना है, ये सिर्फ यही एक्सरसाइजेस करनी है. यू थिंक ऑफ some other examples, you think of some other situations, and then you make sentences, you talk about that, you think about something maybe last week जो आपने किया, explain that part. Yesterday आपने जो किया, explain that part. Tomorrow if you are planning to do something, talk about it, that tomorrow. If you don't have anyone, अगर कोई नहीं है, so then talk to yourself, उससे बात करिए, right? And for that, as I said earlier, that you can take the help of mobile phone, right? मोबाइल फोन यूज करिए, अपनी जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, सेंटेंस यूज करना चाह रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करिए एंड रिकॉर्ड करके फिर से सुनिए, राइट? सो हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, और रिसोर्सेज मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं. सो लेकिन आपको ये देखना है कि वो रिसोर्सेज आप कैसे अच्छे से यूज करेंगे. जितने ज़्यादा अच्छे से रिसोर्सेज यूज करेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, एंड ये भी आप देखेंगे कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती रही है, हो रही है, और धीरे धीरे फ्लुएंसी भी बढ़ेगी, धीरे धीरे डाउट्स भी जाएंगे, एंड यू विल सी दैट सेंटेंसेस विल कम नेचुरली, कंफर्टेबली. नेचुरली भी आएंगे, कंफर्टेबली भी आएंगे. नेचुरली इट मीन्स द वे यू थिंक इन हिंदी, in the same way you will see that sentences are coming in English without translation. Without translation sentences are rahe, right? You will realize that, you will experience all these things. But in सारी चीजों को experience करने के लिए again you have to practice, okay? Without practice ये सारी चीजें नहीं होंगी. कंफ्यूजन एज इट इज रहेगा. हाँ, ये सिर्फ ये पॉइंट हो जाएगा कि आपने स्ट्रक्चर सीख लिए हैं, आपको स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई आपको मिल गया and that person is trying to ask some questions, that person wants to know about something, right? So there that person will ask some questions,
And if you are comfortable, then only you would be able to answer those questions. Otherwise, there will be some sort of hesitation, confusion, or you will start avoiding that person. Okay, सारी चीजें हो जाती हैं, राइट, जब इस तरह का हेजिटेशन कंफ्यूजन होता है. सो इसी के लिए है कि आपको कोशिश ये करनी है अपनी साइड से दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी ये हो सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्स हैं, प्रेपरेशंस हैं, राइट, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे भी देना है, राइट. सो यू कैन pay attention to that part also, that is also important, but as I said earlier, that at least 10-15 minutes, very important, right? So on daily basis you need to take out 10-15 minutes, and once exams khatm ho jayenge, so then you can pay more attention to this part and you can practice more. Okay. लेकिन daily basis पे at least 10-15 minutes very important. Okay. चलिए, सो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज दैट आई गेव यू अर्लियर. ओके, आई एम शेयरिंग इट विथ यू. Okay, I'm opening the page. So in this exercise आपको simply as per the text पढ़ के जैसे हमको idea हो रहा है that what kind of sentence should be there, what kind of information we are trying to give, what kind of information we need to give, right? And how to complete this part. Okay, so for example, if you read like this and if you see that there are two situations, one is something related to the habit, related to the routine of a person, and one is something related to something is going on, something is in progress, action is happening. So wherever you see that something is talked about habit or routine, or where you see that the action is going on, simply you have to use sentences that way only. So my name is Lucas, so I'm just reading, so you just review all your answers. My name is Lucas. I'm a student. I study at a secondary school near my house. Today, I'm at home and I'm doing my homework now. So now it is a small hint here that something is going on. That's why this word is there now. So, and I'm doing my homework now. My family lives in Canada. My father is a farmer. His name is William. He works 8 hours a day, right? So something he does on daily basis. What is that? He works 8 hours a day. His routine is there. He is working in the field at the moment. So at the moment is that hint that will tell you that something is going on. So he is working in the field at the moment. My mother is in the field too. My mother is in the field too. So my mother is in the field too. वो भी field में है. That sense is coming. She helps my father. So this is her habit. This is her routine that whenever my father goes in the field, right, she helps. She helps my father. She helps him, right? They are moving the animals into the new field. So action is going on. They are moving the animals into the new field. My father and mother are wearing coats and gloves because the weather is very cold, but it is not snowing, right? So that way you need to see that some sentences are coming as habit, as routine. Some sentences are giving the idea of action is happening. So that way you have to make sure that you are getting the idea how to use these sentences. Okay, so we usually get up early. So now this is something related to the habit, okay, related to the routine. We usually get up early. क्या हम ऐसे बोलेंगे we usually are getting up early? No, that will not make sense. We usually get up early, but my brother sleeps right now? No,
but my brother is sleeping right now. He doesn't like getting up early. So this is his habit that he doesn't like getting up early. उसको जल्दी उठना वो पसंद नहीं करता है, right? And my elder sister Amelia is in the living room. She is in the drawing room. We also call drawing room living room, and she is looking after her son now. Look after, it means take care. So she is taking care of her son now. In place of taking care, we can also use look after because this is a continuous sentence. So that's why we are adding ing here. And she is looking after her son now. He's so cute. He often, he often, okay, cries at night. So his habit, okay, he often cries at night, but he's not crying at the moment. But अभी तो वो नहीं रो रहा है, right? But he's not crying at the moment. Okay. So this way, all the sentences are there. Again, इस exercise में हमारे लिए एक और आइडिया था कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये सेंटेंसेस पढ़ के उसका मैसेज हम समझ रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सेंटेंसेस हम कंप्लीट कर रहे हैं. सो कहाँ पे कंटिन्यूअस आना है ये समझने के लिए हम कहाँ पे हैबिट से रिलेटेड सेंटेंसेस आना है ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ समझने के लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज थी जहाँ पे आपको समझ में आ जाए. सो मोर इम्पोर्टेंट इज दैट व्हेन यू रीड इन द सेम वे व्हेन यू थिंक, राइट, जब आप रीड कर रहे हैं जब आप सोचते हैं, सो इन द सेम वे यू हैव टू मेक श्योर दैट you are using meaningful sentences, you are using correct sentences. दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं. सेंटेंसेस मीनिंगफुल भी होना चाहिए एंड करेक्ट भी होना चाहिए, राइट? चलिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कहीं पे कोई क्वेश्चन या डाउट होगा, सो देन यू हैव दैट कमेंट सेक्शन. यू कैन राइट योर डाउट, राइट योर क्वेश्चन. यू कैन आस्क if there is some confusion with the help of that comment section. You can write any question there, right? If there is some confusion, you can write, you can ask, okay? And you need to take the help of that comment section so that अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, राइट? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि हमको एक और सिचुएशन यहाँ पे हमको मिल रही है, राइट? सो उस सिचुएशन को थोड़ा सा हम समझेंगे, उसका आइडिया लेंगे एंड यू विल आल्सो सी दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है एंड उस स्ट्रक्चर को हमको कैसे फॉलो करना है एंड व्हेन यू यूज दैट स्ट्रक्चर व्हाट काइंड ऑफ सेंस कम्स आउट. जब वो स्ट्रक्चर यूज होता है तो किस तरह का सेंस निकालते हैं, राइट? सो 35 डेज की जो आपकी जर्नी है उस जर्नी को आपको एनालाइज करना है एंड कोशिश ये करनी है कि जो हमारी 35 डेज की जर्नी है इसमें हमने जितनी भी सीखे चीज़ें समझी हैं अभी तक हम उन सारी स्ट्रक्चर्स में, उन सारी सिचुएशंस में हम कंफर्टेबल हो गए हैं. वी नो वेरी वेल हाउ टू यूज ऑल दोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज पर द सिचुएशंस. ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए. ओके, सो ये रिजल्ट आप ही अपने खुद जज हैं जज करने के लिए कि कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है. अगर कंफ्यूजन है तो फिर देन आपको मेक श्योर करना है कि वो कंफ्यूजन्स दूर हो, राइट? बिकॉज कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उनको दूर होना चाहिए. ओके, ऑल राइट. सो आज हम समझने वाले हैं one more situation that is known as present perfect. So we call this situation as present perfect. Now, present perfect situation जो है, this is somewhat confusing. थोड़ा सा इसमें confusion रहता है because ये कुछ ऐसे ही sound करती है that you are talking about past. राइट? सो ऐसे ही कुछ ऐसे सेंटेंसेस साउंड करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं मैसेज पास्ट का ही निकलता है, राइट? सो इसलिए थोड़ा सा इसमें सिचुएशन में कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन हमको थोड़ा सा ऐसे समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, एज दी जो ये टर्म है प्रेजेंट परफेक्ट जो हमको सजेस्ट कर रही है
कि प्रेजेंट की बात हो रही है, एंड परफेक्ट इट मीन्स जो भी वर्क है, जो भी सिचुएशन है, वो कंप्लीटेड है, वो फिनिश्ड हो चुकी है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट परफेक्ट. एंड व्हेन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन, यहाँ पे वर्ब्स के थर्ड फॉर्म यूज होंगे. सो जितने भी वर्ब्स, वॉट एवर, अब वो वर्ब कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. यहाँ पे उसके इन सिचुएशन में हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. एंड थर्ड फॉर्म, जिसको हम वर्ब थ्री भी बोलते हैं, थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे अब आपको जरूरत है कि वर्ब के आपको थ्री फॉर्म्स अच्छे से पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट फॉर्म की भी रिक्वायरमेंट है, सेकंड फॉर्म की भी रिक्वायरमेंट है. अब देयर इज वन मोर सिचुएशन जहाँ पे हमको थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट. So this is important that you should know very well all the three forms. जितने भी verbs हैं, common verbs हैं, और verbs हमको ऐसे समझ में आते जाते हैं जब हम sentences use करते हैं, तो हमको समझ में आता जाता है कि yes we need this verb, ये verb चाहिए हमको. And when you come across any new verb, any new word, then see what are the three forms. So ये भी एक homework है कि जब भी कोई नया verb आए तो उसके three forms देखें, स्पेलिंग्स के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ. प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? सो दिस इज समथिंग very important, and then you have to take care of this point also, that here we are going to use verb third form. Okay. So when we talk about present perfect, we follow this simple structure for positive sentences. Positive sentences use करने के लिए we are following this simple structure, which tells us that use any subject. Any subject, it means when you use singular subject, you will use has and past participle. Past participle, it means verb third form. So verb third form को हम past participle भी बोलते हैं. सो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करिए एंड थर्ड फॉर्म यूज करिए, एंड जो भी रिमेनिंग पार्ट आ रहा है सेंटेंस में, दैट वी कॉल ऑब्जेक्ट, एंड फिर ऑब्जेक्ट यूज कर लीजिए. In the same way, when you are talking about plural subject, so with plural subject use have. So ये एक छोटा सा डिफरेंस है. Singular subject use has, plural subject use have, and with all the subject we will use verb third form. ओके, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चंस हो, WH वर्ड के क्वेश्चंस हो. ओके, सारी जगह पे पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होना है. और अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस हमको ये आइडिया देते हैं कि कोई चीज पास्ट में शुरू हुई और वो अभी प्रेजेंट में उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिख रहा है. प्रेजेंट में उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिख रहा है. सो पास्ट में कुछ स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी उसका रिजल्ट दिख रहा है, राइट? सो इस तरह की सिचुएशन में यूज करेंगे. हम वहां पे भी यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट जहाँ पे हम कुछ अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कर लिया है, मैंने ऐसा देख लिया है, राइट? समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे कुछ हम एक्सपीरियंस शो करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम सिंपल सा ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट कर ली है, वो चीज़ ओवर हो गई, हमने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, राइट? अब नाउ ये कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंस हो सकता है, राइट? जब हम ये इसके एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर होगा, राइट? सो यहाँ पे समझने के लिए हमारे पास क्या पॉइंट है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें हम उसका सेंस देखें किस तरह से निकल रहा है. सो ये एग्जांपल्स पढ़िए. यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हैज एंड हैव का यूज हो रहा है. हैज एंड हैव यूज हो रहा है, एंड वो क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, एंड इन ऑल दीज सेंटेंसेस हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं लॉस्ट, सो डेफिनेटली ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है. नाउ व्हाट इज द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म? ये सेकंड एंड फर्स्ट फॉर्म क्या है? नॉट थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे दिया ही हुआ है. सेकंड एंड फर्स्ट फॉर्म क्या है वो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए.
अगर हम टॉक देख रहे हैं, ईडी लगा हुआ है, सो इजीली आ जाएगा ध्यान में कि टॉक इज द फर्स्ट फॉर्म, टॉक्ड इज द सेकंड फॉर्म एंड टॉक्ड इज आल्सो थर्ड फॉर्म। ओके, गॉन हम देख रहे हैं तो हमको इजीली क्लिक हो जाएगा कि गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ go, went, gone. Go first form, went second form, gone third, right? So this is all about understanding. So ये points पहले तो समझ लें and then see कि किस तरह के sense निकल रहे हैं इन sentences। ये जो हम sentence use कर रहे हैं किस तरह का sense निकल रहा है। So for example, he has lost his key. What is the meaning coming out? This is something that something has already happened. ओके, समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, कुछ हो चुका है। एंड क्या हो चुका है? ही लॉस्ट हिज की, उसने अपनी की खो दी है। उसके पास अब प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि उसने अपनी की खो दी है, राइट? सो ही डजंट हैव हिज की विथ हिम, कि अभी उसके पास की नहीं है, उसने अपनी की खो दी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोलते हैं आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने अपनी की खो दी है। ओके, यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस हम ये देखें कि अगर यही सेंटेंस हम पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म्स यूज करते हैं, सो हमारा सेंटेंस क्या होता? आई लॉस्ट माई की, ही लॉस्ट हिज की। ओके, लेकिन उसका सेंस क्या निकलता? ही लॉस्ट हिज की, उसने अपनी की खो दी थी। सो बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो पास्ट में ही कुछ हुआ, राइट? समथिंग हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे सेंस क्या निकलता है कि पास्ट में कुछ हुआ और उसका इफेक्ट अभी भी है, अभी भी मेरे पास की नहीं है। डेफिनेटली एक दो घंटे पहले की खोई होगी, राइट? जब देखा पता चला कि अरे की तो है नहीं। सो जब पता चला कि अरे मेरी तो की खो गई है, राइट, मैंने मिस कर दिया उसको कहीं पे, आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने की खो दी है। सो इन दिस वे वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, जितने ज्यादा आप प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स सुनेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, राइट? बिकॉज थोड़ा सा इसमें यही कंफ्यूजन रहेगा कि क्या ये पास्ट इंडेफिनिट, क्या इसमें सेंस पास्ट इंडेफिनिट का निकल रहा है? बिकॉज इट साउंड्स इन द सेम वे, राइट? ही लॉस्ट हिज की, उसने अपनी की खो दी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वे। शी हैज टॉक टू सर, ओके, शी हैज टॉक टू सर, राइट? इट मीन्स शी हैज फिनिश्ड दिस वर्क, राइट? शी हैज टॉक टू सर, उन्होंने सर से बात कर ली, right? There is a girl, let's say her name is Rita. Rita has talked to sir. Rita ने सर से बात कर ली है. So this is the sense you are giving. Father has gone to the market. Okay, you want to just give the message that father has gone to the market. Father market चले गए हैं. Father is not at home. Father has gone to the market. यही सिचुएशन में अगर हम सेंटेंस ऐसे यूज करते, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करते, फादर वेंट द मार्केट, फादर वेंट टू द मार्केट। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, तभी तो वेंट आ रहा है। एंड क्या सेंस निकल रहा है? फादर मार्केट गए थे, फादर मार्केट गए थे। तो अभी क्या सेंस निकल रहा है? फादर हैज गॉन टू द मार्केट। सो जब आप यूज करेंगे फादर वेंट टू द मार्केट, फादर मार्केट गए थे, वहां पे हो सकता है कि आप के फादर अभी घर पे ही, राइट? फादर वेंट टू द मार्केट एंड आफ्टर सम टाइम ही केम बैक, गए थे, थोड़ी टाइम बाद वापस आ गए। लेकिन जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं फादर हैज गॉन टू द मार्केट, सो इसका क्लियर मैसेज ये आ रहा है दैट स्टिल फादर इज इन द मार्केट, फादर इज नॉट एट होम, फादर अभी घर पे नहीं है, अभी भी फादर मार्केट में ही है। फादर हैज गॉन टू द मार्केट, फादर इज नॉट एट होम, वो मार्केट चले गए, राइट? सो ऐसे आपको इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट में, आपको उनके सेंटेंसेस में जो डिफरेंसेस हैं, राइट, इस तरह का जो छोटा सा डिफरेंस आ रहा है सेंटेंसेस में, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस एंड देन यू नीड टू सी दैट किस तरह से हमको सेंटेंसेस यूज करना है। दे हैव गॉन टू दिल्ली, right? So again, you are giving the similar message. जैसे father has gone to market, in the same way they have gone to Delhi. वो दिल्ली चले गए हैं. This is the sense you are giving. They are not at home.
लेकिन अगर ऐसे ही हम बोलते थे वेंट टू दिल्ली, तो वहां पे पॉसिबिलिटी थी कि सेंस ये निकले कि हाँ वो गए थे, अब वो घर पर हैं, अब वो वापस आ गए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड दैट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम इन वर्ड्स को यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस यूज करते हैं, राइट। एंड ये वर्ड्स जस्ट ऑलरेडी उनमें से कुछ वर्ड्स हैं, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं, राइट। जैसे कुछ एडवर्ब्स हैं, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमको हिंट देते हैं कि डेली रूटीन की बात हो रही है, हैबिट्स की बात हो रही है, जैसे समटाइम्स, ऑलवेज, यूजुअली, राइट, ओकेशनली, नेवर। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जहाँ पे हमको मिल रहा था हिंट कि कंटिन्यूअस की बात हो रही, फॉर एग्जाम्पल नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट। इन द सेम वे देयर आर सम वर्ड्स जो हमको हिंट देते हैं दैट वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस बेटर रहेंगे इफ यूज दैम। ओके, सो जस्ट, इट मीन्स अभी, अभी की बात हो रही, राइट। क्लास हैज जस्ट स्टार्टेड, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, क्लास हैज जस्ट स्टार्टेड। ओके, द क्लास हैज ऑलरेडी गॉट ओवर, क्लास पहले से ही, ऑलरेडी इट मीन्स पहले से। ओके, द क्लास हैज ऑलरेडी गॉट ओवर मतलब खत्म हो जाना। द क्लास हैज ऑलरेडी गॉट ओवर, क्लास पहले से ही खत्म हो चुकी है। ओके, द क्लास हैज ऑलरेडी गॉट ओवर। दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, दे हैव ऑलवेज हेल्प यू, उन्होंने आपकी हमेशा हेल्प की है, दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। आई हैव जस्ट टेकन टी, आई हैव जस्ट नाउ, आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी टेकन टी ली है ना। आई हैव जस्ट टेकन टी, आई टुक टी, अगर हम सेंटेंस को ऐसे देखें, आई टुक टी, मैंने टी ली थी। क्लास स्टार्टेड, क्लास शुरू हुई थी। द क्लास गॉट ओवर, क्लास खत्म हो गई थी। दे हेल्प्ड यू, उन्होंने आपकी हेल्प की थी। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। Okay, so you need to understand that difference and you need to know कि कुछ स्मॉल हिंट्स भी हैं, जो उन हिंट्स की हेल्प से हम सेंटेंसेस को और इजीली यूज कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ओके, सो आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी ही टी ली है। फादर हैज ऑलरेडी बुक द टिकट्स। ओके, कॉमनली वी मेक सेंटेंसेस लाइक दिस कि पहले ही टिकट्स बुक कर लिए हैं। सो दैट वे यू आर सेइंग फादर हैज ऑलरेडी बुक द टिकट्स, फादर ने पहले से ही टिकट्स बुक कर लिए हैं। इफ यू से लाइक दिस, father booked the tickets, if you are using second form, then see the sense, what is the sense coming? Father booked the tickets, father ने tickets book किए थे। कब की बात हो रही है, you don't know, father booked the tickets yesterday, last week, 2 days ago, we don't know, right? Father has already booked the tickets, it means कुछ काम past में हुआ और वो अभी भी true है, right? Because उसका जो effect हो रहा है, impact आ रहा है, वो अभी present situation पे आ रहा है। Father has already booked the tickets and we will go to watch movie in the evening, right? पहले ही tickets book हो चुके हैं and हम evening में movie देखने जाएंगे, so because father has already booked the tickets, like that. Okay, I hope that you are getting these examples. And again, if there is any confusion, if there is any question, you have comment section, write your confusion question there. And if you have some more examples that you can think of, then share those examples in the comment section. Okay, and if you see that there is some confusion, ये भी हो सकता है कि आप कुछ जब सेंटेंस सोच रहे हैं तो आपको कुछ confusion है कि ये whether it should be in past or whether it should be in perfect. अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जो कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, राइट। वहाँ पे you will get the idea. Okay, then we will discuss that those examples in the next class. ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको विल हेल्प कि हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, एंड सम ऑफ देम आर जस्ट एंड ऑलरेडी। ओके, इसी तरह से जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, सो स्ट्रक्चर इज वेरी इजी। यू सिंपली हैव टू ऐड नॉट,
when you think of negative sentences. And again, remember, with singular subject has not, past participle object, with plural have not, past participle and then object. Okay, so यहाँ पे doesn't don't का कोई role नहीं है, right? So when you are thinking of present perfect sentences, you will not think of doesn't, don't, right? Because काफी सारे ऐसे structures हैं, अलग अलग structures हैं, जैसे position के sentences थे, प्रेजेंट सिचुएशन के हैज टू हैव टू के सेंटेंसेस थे, राइट? वहां पे हमने डजंट एंड डोंट यूज किया है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पे हमको सिंपली हैज और हैव यूज करना है एंड बस उसमें नॉट लगा देना है. सो हैजंट, हैवंट. ओके, इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, short forms, we will use has not, hasn't, have not, haven't, and again we are using past participle. Okay, so past participle तो सब जगह ही आ रहा है. Okay, now जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, सो देयर वी कैन यूज द वर्ड यट. यट हम यूज कर सकते हैं एंड यट सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होना है. ओके, एंड क्वेश्चंस में यूज होना है. पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम यट यूज नहीं करेंगे. Okay, now read these examples and see what is the sense coming out if you make sentences like these. अब जरूरी नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंसेस हमको बनाना है तो हमको यट यूज ही करना है, राइट? यट का मीनिंग है अभी तक नहीं. सो व्हेन यू आर making sentence, when you want to use yet, it simply means that not up till now, abhi tak nahi, and that sense you want to give by using this word yet. Okay, so for example, guests have not come yet. What is the sense coming? Guests have not come yet. Guests abhi tak nahi aaye hain, so they have not come yet. Okay, and remember that here come is the third form of first form come. Okay, because first form and third form both are same. Come, came, come. So that's why we are using come here. So guests have not come yet. He has not returned yet. Similar kind of sentence. वो अभी तक वापस नहीं आया है. He has not returned yet. ओके, एंड अगर यही सेंटेंसेस हम पास्ट में बनाते तो स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता, राइट? गेस्ट डिडंट कम एंड सेंस भी अलग हो जाता. गेस्ट डिडंट कम, गेस्ट नहीं आए थे. सो समथिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, समथिंग दैट हैपेंड अर्ली. ही डिड नॉट रिटर्न, he did not return, वापस नहीं आया था, राइट? he has not returned yet, पास्ट में कुछ एक्शन हुआ एंड जिसका इम्पैक्ट अभी भी है. पास्ट में वो कहीं गया और लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है. सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस, he has not returned yet, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं. Okay, so for example, father went to the office in the morning and he hasn't come back yet. Okay, morning में गए थे, अभी तक, right, गए थे और अभी तक वापस नहीं आए. So he has not come yet, right? He did not come, अभी he did not come, वो वापस नहीं आए थे. Not making sense as per the situation. Okay, so understand the situation के according you will make a sentence. You will use the correct structure, past indefinite or present perfect. Okay, there is a clear difference, right? Clear difference है, difficult नहीं है ज़्यादा, but you will understand in a better way once you make lot of different sentences, once you think of different examples, right? जैसे कहीं पे भी कोई example आ रहा है, उसका past भी देख लीजिए try करके कि what is the sense coming. You will clearly understand that yeah, there is a difference. Okay, I have not told a lie. Okay, so simply you are talking about something that you have not done. जो आपने नहीं किया है, आप सिंपली उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है. आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला. आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई. Okay, if you are thinking about past situation, then you would say I didn't tell a lie, मैंने झूठ नहीं बोला था. But if you are using the present situation, right, and you are just giving this statement, I have not told a lie, मैंने झूठ नहीं बोला है,
So this is the sentence. Okay. So now you can see that what is the sense coming when we make present perfect related sentences. Okay. We have not thought yet. What is the sense coming? We have not thought yet. So here we are using the third form of think, that is thought. Okay. We have not thought yet. हमने अभी तक सोचा नहीं है. अभी तक हमने सोचा नहीं, राइट? इन द सेम वे आप बोल रहे हैं मैंने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है. आपने कुछ टाइम पहले होमवर्क कंप्लीट करना है स्टार्ट किया, राइट? सो दैट सिचुएशन पास्ट हो गई और उसका इम्पैक्ट अभी तक है, प्रेजेंट में भी है कि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है. सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस, आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क येट. आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क येट. सो ये जो यट यूज हो रहा है वो अभी तक के लिए यूज हो रहा है. सो जहां पे भी हमको इस तरह का सेंस देना है वी विल यूज यट. ओके, एंड वी यूज यट इन नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, यट जो है हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे. We have not thought yet. I have not completed my homework yet. I have not talked to my friend yet. I have not invited guests yet. Okay, so it could be any sentence. Now, the point is that you think of your own examples. अपने खुद के examples सोचिए, and then you see that what kind of sense is coming out when you are thinking, when you are using those sentences. किस तरह का sense निकल रहा है, and what sense you want. Okay, क्या सेंस आप चाहते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोच कुछ और रहे हैं एंड सेंटेंस इज गिविंग समथिंग एल्स. ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. Father has not gone to office today. Okay, father is at home, right? And आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि आज father office नहीं गए. Okay, father has not gone to office today. All right, so I hope that these examples are helping you in terms of understanding the usage of present perfect, where we use, how we use. You are getting ideas with the help of these examples. Okay, now important is that you need to think of your own examples and you have to see that what kind of sense is there when you make sentences like this. Okay, simple sentences will come. For example, आप बोल रहे हैं मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क. सो यू आर सिंपली गिविंग द इंफॉर्मेशन, राइट? मैंने फॉर एग्जांपल 12th कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड माय 12th. ओके, आई हैव पास्ड माय 12th क्लास. आई हैव डन ग्रेजुएशन. सब चीजें, राइट, इन द सेंस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन कि ये चीज हो गई है, कंप्लीट हो गई है, पास्ट में हमने स्टार्ट किया एंड अभी इम्पैक्ट ये है कि दैट इज ओवर. Right? So I have done my graduation. I have done my, I have passed my 12th class. I have done, right? Something, कुछ भी हो सकता है, right? So that depends on the sentence. चलिए, right? So यहाँ पे हमको क्या आइडिया मिल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो हम इंफॉर्मेशन, राइट, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या कोई चीज अनाउंस करना चाहते हैं, जैसे हमने अनाउंस किया कि मैंने 12th क्लास कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है. सो आई हैव डन ग्रेजुएशन. आई हैव जस्ट completed my graduation. Abhi, I have just completed my graduation, right? So recent happening or information that you want to share with others, where you want to say that I have done, this is over, okay, like that. Okay, so for example, आपने कुछ काम किया and you are saying, oh, I have cut my finger. Okay, एकदम से कोई चीज हो गई, so you are giving that information कि ऐसा हो गया है. I have cut my finger. मैंने अपनी finger काट ली है. You were doing something, right? You were, for example, you were cutting vegetables and something happened at that time. Okay, उसी वक्त वो हुआ while you were cutting the vegetables. So what would you say? Oh, I have cut my finger. मैंने अपनी finger काट ली है, right? So that way. यहाँ पे you know that we have all the three forms of cut same, cut, cut, cut. So that's why cut is here, but it is in past participle form. It is in third form. Okay, the road is closed. There has been an accident. Okay, so यहाँ पे is our am का third form use हुआ है, that is been.
is RM first form, was were second form, been is the third form. There has been an accident. Information दी जा रही है एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, राइट, हो चुका है. So accident हुआ है. There has been an accident. Okay. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ जब आप हम पढ़ते हैं तो किस तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं. द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men. पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है. सो दे आर इन कस्टडी, राइट. वो अभी पुलिस की कस्टडी में है, प्रेजेंट सिचुएशन में वो कस्टडी में है. सो द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द रॉबरी. किस सिलसिले में? रॉबरी, लूट के सिलसिले में उनको अरेस्ट कर लिया है. द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men in connection with robbery. So that's how you will see that there are different sentences related to present perfect. This is more related to understanding different examples and see that you are making different sentences to understand what is the sense coming out when you use present perfect sentences. In present perfect sentences use करने के लिए structure is very simple. बस थोड़ा सा आपको ध्यान कहाँ पे देना है, सेंस पे, कि किस तरह का सेंस वी टेक आउट व्हेन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे एंड यू विल सी मोर एग्जांपल्स एंड आई विल गिव यू मोर आइडियाज कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, रिकग्नाइज करना है, कैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होना है, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करेंगे बिकॉज दैट काइंड ऑफ सेंस इज देयर, राइट. सो दिस यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड अभी के लिए आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है एंड ये होमवर्क आप कर लेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको, राइट. यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए कि बस यू हैव टू सी व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट फ्रॉम दीज सेंटेंसेस. सो देयर आर 2 parts, 2 parts हैं इस एक्सरसाइज में. फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी और येट यूज करना है. ओके. सो ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटेंसेस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में, एंड सेकंड पार्ट में आपको जस्ट यूज करना है. ओके. यहाँ पे जितने भी आपको ये एग्जांपल्स दिख रहे हैं सब में फर्स्ट फॉर्म यूज हुए हैं, राइट. सो आपको एक और क्या करना है, पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको इनके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स यूज करना है. थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, राइट, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना. सो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे. ओके. एंड जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप ये देखेंगे कहाँ पे आपको ऑलरेडी यूज करना है, कहाँ पे यट यूज करना है. ओके. सो निक हैज ड्रंक अ कप ऑफ टी. सेंटेंस कुछ ऐसा हो सकता है, निक हैज ऑलरेडी ड्रंक अ कप ऑफ टी. ओके. निक हैज ऑलरेडी ड्रंक अ कप ऑफ टी. उसने पहले ही पी लिए चाय, राइट. आई हैवंट स्वेप्ट द फ्लोर, इट इज वेरी डर्टी. सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि ऑलरेडी होना चाहिए, यट होना चाहिए, व्हाट इज द सेंस कमिंग, क्या सेंस निकल रहा है, क्या निकालना चाह रहे हैं सेंस. उसी के अकॉर्डिंग यू विल यूज ऑलरेडी एंड यट. सो कहाँ पे ऑलरेडी आना चाहिए, कहाँ पे यट, दिस यू विल सी. ओके. एंड यहाँ पे तो सिर्फ सेकंड पार्ट में जस्ट यूज करना है. सो जस्ट यूज कर लेंगे सेंटेंसेस में, बस यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव जस्ट गॉन टू द सिनेमा. दे हैव जस्ट गॉन टू द सिनेमा. पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, राइट. सो एक और पॉइंट जो है कहाँ पे हैज, कहाँ पे हैव यूज होना है, एंड उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. एंड सारे ही सेंटेंसेस में आप ये देखेंगे व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट when you complete the sentence. For example, they have just gone to the cinema. किस तरह का सेंस आ रहा है, वो अभी सिनेमा गए हैं. they have just gone to the cinema. she has just gone to the cinema. वो अभी ही सिनेमा गई है, राइट. लाइक दिस. सो ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेंगे. ओके. एंड देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट हम किस तरह से उसका सेंस निकाल. ओके. एंड बीच बीच में कहीं पे पास्ट इंडेफिनिट यूज करके देखिए कि किस तरह का सेंस निकलता है जब पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है. बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. This is important to understand the difference between the 2 parts, past indefinite and present perfect, because there is always confusion between the 2 parts. The confusion is where to use what. Okay. So इस confusion को समझने के लिए the help of different examples, just understand
that how to use them, what kind of sense comes out when we use present perfect sentences and when we use past indefinite sentences. Okay, and from here we will continue in the next class. And if there is any question, any doubt, you have comment section, you can write there and complete these exercise, understand. And remember that there are other classes going on, so you can spread the message. You can talk about these classes to your friends and to your family members also, right? And you can ask them to watch different videos. You can also watch different videos of all the other classes. Okay, and that's all, right? Okay, आज के लिए इतना ही, and we will continue in the next class. All right, everyone. Bye bye. Take care.